हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 के ऑर्गेनाइजिंग यूनिट के बारे में। ये है यूनिट नंबर 5। इससे पहले मैंने डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताया तो 2015-2018 में आया था। स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग तो 2016 एंड 2022 में आया था। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये 2014 में आ चुका है, 2019 में भी आ चुका है, 2016 में भी आ चुका है। तो इसका आंसर लिखिए अच्छी तरीके से। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नंबर 1 देखिए स्पेशलाइजेशन। अंडर ऑर्गेनाइजिंग the whole work is systematically allocated and divided into different parts. First off, right man is put at the right job. First off, it increases the efficiency of the workers and motivates them to put their best into the work. First off, repetitive performance of a specific job on a regular basis helps a worker to gain experience and get specialized into the work. दूसरा देखिए better human relations improve in a good organizational setup. First of an organization consists of human beings and their satisfaction will help in improving human relations. First, a clearly defined work authority, responsibility, accountability will enable individuals to work in a free atmosphere. और हाँ, और एक बात बता दूँ, अगर आपको सारे पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सारे के सारे पीडीएफ मैं आपको वेरी रिजनेबल रेट में शेयर कर दूंगा सारे यूनिट्स के, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए प्रॉपर कम्युनिकेशन। ए गुड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ द एस्टैब्लिश ऑफ ए प्रॉपर स्ट्रक्चर विल एनेबल स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्डर्स एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ द सुपीरियर कैन इजीली कम्युनिकेट देयर ऑर्डर्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स एंड द सबऑर्डिनेट्स कैन कम्युनिकेट देयर डिफिकल्टीज एंड ग्रीवेंसेस टू द हायर अथॉरिटीज। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स या कंप्लेंट, ठीक है। नंबर 4 देखिए इजी कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन is an important means of bringing coordination among the various departments of the enterprise. First, it creates clear-cut relationships between departments and helps in laying down balanced emphasis on various activities. Number 5 देखिए optimum utilization of resources. Organizing provides fuller and efficient use of all human, physical and financial resources. First, a proper allocation of jobs helps in avoiding overlapping of work and ensures optimum use of resources. उसके बाद देखिए promotes growth and diversification. With optimum utilization of resources and proper diversion of growth, division of growth, work and departmentation, companies can easily meet the challenges and can expand and diversify their activities in a planned manner. उसके बाद देखिए training and development of personnel. A good organization offers an opportunity for the training and development of personnel. First, a clearly defined authority provides a scope to try new ideas in improving the work of the organization. And last point देखिए encourage initiative. A good organizational structure will provide sufficient scope for taking initiative. First, persons are allowed to try new ideas for improving their work. First, the policies and procedures are laid down for the guidance of managerial personnel. तो यही रहा सारे वीडियोस। मैंने आज के क्वेश्चन में आपके साथ सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, सारे के सारे पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।